हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज हम एक और मैटर लिखने वाले हैं जो कि केसी जैसा मैटर है। हमने फर्स्ट क्लास में एक मैटर लिखा था जिसको बहुत लोगों ने कहा कि इस टाइप के मैटर्स आप और लिखवाइए। तो आज हमारी ये सेकंड क्लास है, इसके अंदर हम उसी टाइप का एक और मैटर जो है वो लिखने वाले हैं। आप लोगों को ये मैटर्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ये सेम टू सेम आपके कैलाश चंद्रा के पैटर्न पे हैं। जहां से कैलाश चंद्रा का मैटर लिखवाया जाता है या कैलाश चंद्रा की बुक में जहां से मैटर निकाला गया है, वही सोर्स, उसी सोर्स से मैं आप लोगों को मैटर्स लिखवा रहा हूँ। अब वो जो बुक है वो 1990s की बुक है, तो इतने टाइम के अंदर जो उस वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारी और चीज़ें अपडेट हो गई हैं, तो वहाँ से मैं मैटर्स उठा करके आपको लिखवा रहा हूँ। ये आप भी ढूंढ सकते हो, लोकसभा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आपको काफ़ी सारे बुक्स मिल जाएंगे। वहाँ से आपको फिल्टर करके अपने हिसाब से डिक्टेशन आप बना सकते हो। तो अभी आज हम एक मैटर और लिखने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पुलिस मॉडरेशन के ऊपर हम ये मैटर लिखेंगे। ये भी 941 वर्ड्स का है। पर मैटर लिखने से पहले आज मैं एक छोटी सी और चीज बता दूं। उस दिन भी मैंने एक पहले छोटा सा पॉइंट बताया था। आज जो पॉइंट है वो ट्रांसक्रिप्शन को लेकर के है। ट्रांसक्रिप्शन पे जब भी आप ट्रांसक्राइब करते हो तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे ये आपकी मान लो कुछ लाइंस है, 15-20 लाइंस आपके डिक्टेशन के अंदर है। ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जब हम ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, मतलब हमारा कीबोर्ड के ऊपर, और हम कैसे सही से उसको टाइप करें, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, उस चीज पे हम फोकस्ड रहते हैं। कई बार ये होता है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 लाइन्स हमने सही से ही जो है ट्रांसक्राइब कर दी, और किसी कारणवश हमारा फोकस जो है इधर उधर हिल गया, और सेम सेम लाइन हमको लग रही है। मान लो एक लाइन के अंदर, फिफ्थ लाइन के अंदर ऑनरेबल मेंबर्स वर्ड्स था, और सिक्स्थ लाइन में भी ऑनरेबल वर्ड से ही जो है वो सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो किसी कारण से हम मान लो फिफ्थ लाइन छोड़ करके डायरेक्टली सिक्स्थ पे आ जाते हैं। एक लाइन पूरी हमारी मिस हो गई। उसके अंदर हमारा एक भी वर्ड सही गलत नहीं हो सकता था, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती थी। पर हमारा जो फोकस है वो भटका और हम डायरेक्टली इस पे आ गए और एक लाइन पूरी मिस हो गई। और एक लाइन में मान लो 8-10 वर्ड थे, तो 10 के 10 वर्ड एज इट इज हमारे गलत हो गए। इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। लोग जैसे क्या है कि ऐसे अपनी अंगुली चला करके करते हैं कि हम इस लाइन पे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइप करते टाइम ये चीज करना आसान नहीं है। इसके लिए जैसे मान लो एक मैं समझाऊं, ये आपका पेज है स्टेनो डायरी का। बहुत सारे लोग बीच में लाइन खींचते हैं, बीच में आप खींचे ना खींचे वो बात की बात है। यहाँ पर आपको एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है। ये मान लो आपकी सारी लाइंस हैं, यहाँ पर साइड में आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है। ये वाली लाइन आप ड्रॉ करो और इधर नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। जितने भी पेज होगा वो पूरा 6 10 12 13 जितने भी लाइंस आए उसमें ये नंबरिंग लिख दो। नेक्स्ट पेज पे वापस से 1 से ही शुरू करो या फिर आगे उसको कंटिन्यू करो। मान लो 13 पे खत्म हुआ तो 14 15 ऐसे चलाओ। अब क्या होगा कि आपको कुछ भी याद करने की या अपनी अंगुली से उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जब फर्स्ट लाइन लिख रहे हो तो आपके दिमाग में रहेगा कि मैं फर्स्ट लाइन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कर रहा हूँ। देन उसके बाद आप सेकंड पे होगे, फिर थर्ड पे होगे, फोर्थ पे होगे, तो आपको एकदम ध्यान रहेगा। इसको और अच्छा करने के लिए जब आप फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर दो तो उस पर टिक लगा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट मैं ट्रांसक्राइब कर चुका हूँ। सेकंड पे लगा दो, थर्ड पे लगा दो। देन 2 4 5 लाइन टिक लगा करके उसके बाद उसको वापस से रीचेक भी कर लो। आप जब ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो रीचेक करके फिर बाद में आगे बढ़ते जाओ। इस चीज को फॉलो करोगे तो आपका कभी भी लाइन मिस होने वाला काम जो है वो नहीं होगा। इससे बहुत सारे लोगों का खराब होता है हमेशा डिक्टेशन। बहुत सारे लोग डिक्टेशन मतलब एग्जाम के बाद जब मेरे से डिस्कस करते हैं तो उसमें बताते हैं कि उनका जो डिक्टेशन है वो इस वजह से खराब हो गया। अब 2 3 लाइन ही आप छोड़ दोगे तो आप ऐसे ही बाहर हो गए। आपकी अगर और मिस्टेक आएगी तो वो तो और एड ऑन होती जाएगी। तो इस चीज को आप फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। चलो अभी आप ये डिक्टेशन लिखो। मैं अभी आपको डिक्टेशन जो है मैंने ऑलरेडी क्लास में लिखवा रखा है, वही आपको मैं सुनवाने वाला हूँ। उसको आप लिखो। उसकी स्पीड 90 से 100 के बीच में रहने वाली है। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मतलब उसको यूट्यूब के थ्रू आप 80 पे भी जा सकते हो, 120 पे भी जा सकते हो। तो एक तरह से उसको आप अपने हिसाब से चेंज करके लिख सकते हो। तो चलिए अभी आप इसको लिखिए। गेट रेडी, 3 2 1 स्टार्ट। मिस्टर स्पीकर सर,
The Honorable Minister has said that the police administration is a state subject and the state government are responsible for its modernization and making other provisions for it, but from time to time the union government also cooperates and gives its support for the modernization of the police force and other related works. Right now, the Honorable Minister has stated in the reply of the very first question that there is a shortage of police personnel in the country. Even today, on an average, one policeman is responsible to look after the police related needs of 1000 persons. No major infrastructural changes have taken place in the police setup till date. Some areas do not have police stations and police force is also lacking in modern weapons. There is a need to strengthen the police system to combat the increasing crimes taking place due to the ever increasing population and economic development of the country. Para. I am of the view that it is not possible till the union government cooperates in this regard. Secondly, in our country, the police system is still governed by the Police Act of 1861, which has been in operation since the days of British imperialism. I would like to know whether the government is contemplating to bring about a change in the infrastructure of the entire police system in view of the changing pattern of crime due to increasing population and economic development. The police still have the slavish mentality of past years. What steps the government proposes to take to bring a change in the mentality of the police force in the present democratic setup? Mr. Speaker, sir, the police is at number 2 in the state list of the Indian Constitution. Hence, it is a constitutional provision that the administration and functioning of police is the responsibility of the state government. But despite all this, we are aware as to how rapidly the crime rate has increased, threats to internal security have increased, and the state governments do not have adequate resources to combat these. Para. Hence, for the last few years, a new scheme has been formulated under which the central government has been providing financial and other help to the state governments for modernization of the police force to equip it with modern weapons and increase its mobility and capacity to communicate. Recently, the Ministry of Home Affairs had written letters to all the state governments and asked them to furnish a perspective plan of 5 years in which details should be furnished about the requirements for modernization of police force so that the union government may hold consultation with the planning commission and the defense commission and provide you help in this regard. Most of the states have given their
prospective plans and action is being taken. Some recommendations have been given, but the center is committed and active in the direction of modernizing the police force and making it efficient to check the crime. Para. Last week, we had an unfortunate implication of terrorism in Andhra Pradesh, and it is relevant to the question asked by the Honorable Minister. The former Minister of Home Affairs and Minister of State for Panchayati Raj of Andhra Pradesh were killed in a landmine blast. Even then, I had laid a great stress to organize a conference of 5 to 6 Naxalite affected states. Now, a decision to organize a conference of these states in the first week of April in Delhi has been taken, in which, other than the Director Chief Ministers of the states, the Director General of Police have been invited to attend the conference. Earlier, too, a similar kind of conference was organized in Hyderabad 2 years back, and a coordination committee was set up. The states are Andhra Pradesh, Maharashtra, and Bihar. These are the principal states. There has been some evidence of people trying to spread to other parts, just as one recent incident in Karnataka. Para. The Karnataka Chief Minister also met me in this connection and pointed out that the impact is being felt very often when there is a pressure, say in Andhra Pradesh, on the Naxalites there. There is a tendency to go away to the neighboring states. That is there. We are conscious of it. But for the time being, I have mentioned about the states which are affected. There were increased activities of extremists and Naxalites in Andhra Pradesh, which unfortunately saw the killing of our minister in Andhra Pradesh. Naxalite activity has been very extensively noticed for many years. We need to strengthen our police forces in respect of technology and weapons, in addition to the funds allocated to the states. Fund is a very important aspect. This activity is more of an economic problem also. Economic backwardness is also a cause for the Naxalite activity. Para. I would like to draw the attention of the Honorable Minister to one aspect. The Government of India should liberally fund the state governments to counter the extremist and Naxalite activities in the state. The Honorable Member is right in saying that the violent activity of this kind, as is being indulged in Andhra Pradesh or other states, has a relation also to economic problems of the people there. Therefore, the task of security and the task of development must be undertaken together by the state governments. So far as security is concerned, the central government has evolved a scheme of reimbursing such states with security related expenditure. Already, Andhra Pradesh has lately been given
an amount of rupees 30 crore. This amount has been released to the state on this account. Stop. सो आई होप आपने ये डिक्टेशन जो है वो अच्छे से लिखा होगा। अब बहुत सारे लोगों से या तो नहीं लिखा गया होगा, तो उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया होगा, तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके लिए नहीं है। जिन लोगों से थोड़ा बहुत लिखा गया है और वो पूरा एंड तक लिखने की कोशिश करे हैं, उनको बस एक चीज और करनी है कि इसको 4-5 बार और लिखिए। मैंने पिछली क्लास में भी बोला था कि आपको ये जब आप 90 पे लिख रहे हो या 80 पे लिख रहे हो, तो उसको फिर स्पीड इंक्रीज करके 3-4 बार और लिखो, सो डैट आपको इस डिक्टेशन से रिलेटेड अच्छे से पूरी जानकारी हो जाए, अच्छे से आप उसको लिखने लग जाओ, कोई भी वर्ड आपका इसमें खराब ना बने। ठीक है, ये चीज आप करिए। इस टाइप के मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डिक्टेशन जो है वो वेबसाइट पे लिखवा रखे हैं। stenoarmy.com की वेबसाइट पर आप जब जाओगे, अकाउंट क्रिएट करना है आपको, और यहाँ पर आपको केसी टाइप जो डिक्टेशन है वो मिलेंगे। इस सेक्शन में लेटेस्ट डिबेट्स एंड स्पीचेस में यहाँ पर काफी सारे डिक्टेशंस जो हैं वो मैंने लिखवा रखे हैं। आप इनको लिख सकते हो, स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो अपने हिसाब से, और फिर उसका ट्रांसक्रिप्शन का आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके और उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा क्लास जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे साइड में लिंक आ रहा है, डायरेक्टली क्लिक करके वहां से टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लो, और जो नेक्स्ट जो पहले वाली क्लास हुई थी वो यहाँ पर आ रही होगी, इसको यहाँ से आप देख सकते हो। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।